Hello, guys. We are going to read class 12th, a very beautiful poem from Flamingo's poetry section, that is A Thing of Beauty. This is written by the very famous British romantic poet John Keats. Although he was trained to be a surgeon, but Keats decided to devote himself entirely to poetry. He was a great romantic poet who has created various poetic romance. This poem is also taken from his longer poem, that is Endymion. And in this beautiful poem, the poet says that a beautiful thing gives us permanent joy, but his concept of beauty goes beyond the physical charm. The theme of the poem is the very first line actually of the poem contains the message that John Keats, the great romantic poet, wants to convey. Actually, Keats was a worshipper of beauty. For him, beauty was truth and truth was beauty. Hence, for him, a thing of beauty is a joy forever. He says that beauty never fades, nor is it ever devalued. It never passes into nothingness. When we are full of sorrows and sufferings, some form of beauty comes to rescue us. It removes the pall of sadness and sorrows and gives us joy and pleasure. Thus, beauty is a boon for human beings. So we can understood very well what John Keats wants to convey with this beautiful poem. Now we are going to read line by line. From the very beginning, we are moving to the stanza number first. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, but it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. The poet says that a thing of beauty is a source of constant joy. Its beauty goes on increasing. It will never fade into or pass into nothingness. A bower is a peaceful and pleasant place in the shade of a tree. It provides us shelter, protection from the hot rays of the sun. A beautiful thing also gives us sound sleep, full of pleasant dreams, health, peaceful breathing. Beauty, hence, does not lead to constant battle. Actually, it guards us, it guards nature. पोइट कहता है कि एक सुंदर वस्तु कभी भी बदलते हुए समय के साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसकी सुंदरता बढ़ते हुए समय के साथ बढ़ती चली जाती है। और इसकी उपमाएं देता है कवि हमें कि ये कैसे है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये एक बोवर की तरह है, एक छायादार वृक्षों के झुरमुट की तरह है। बोवर होता है छायादार वृक्षों का झुरमुट जो हमें सुकून देता है। एक मीठी नींद की तरह है जो सपनों से भरी हुई है। एक अच्छी सेहत है और एक राहत और सुकून की सांसों की तरह है जो हमें एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर मिलती हैं, जो हमें एक मीठी नींद में मिलती हैं। तो कई सारी उपमाएं जो हैं वो जॉन कीट्स ने यहाँ यूज़ की हैं। Furthermore, moving to second stanza, John Keats says, "Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching." The poet says that as a result of this, every morning we are weaving a flowery wreath to bind us to the beauties of the earth. Despite the sadness and the feeling of depression, we all possess evil qualities of hatred and disappointment. We suffer from lack of noble qualities and unhealthy evil ways. एक्चुअली कीट कहते हैं कि इसी वजह से जो हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम हमारे आसपास जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं हम उनको एक फूलों के हार की तरह गूंथ कर रखना चाहते हैं। रैत आपने देखा होगा, वो हार जो होता है ना शहीदों को पहनाया जाता है फूलों का, एक गोल राउंड का, उसको रैत बोलते हैं। कि हम अपने आसपास जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं उनको एक हार में सजा लेना चाहते हैं,
एक फ्लावरी बैंड बना लेना चाहते हैं उनको, ताकि वो हमें अर्थ से बांधे रख सके। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस कहता है इन स्पाइट, बावजूद निराशाओं के, डेस्पोंडेंस होता है निराशा, इन ह्यूमन होता है अमानवीय, डेयर्थ ऑफ नोबल नेचर, यानी इस पृथ्वी पर डेयर्थ है नोबल नेचर की, डेयर्थ होता है कमी, नोबल नेचर मतलब भले लोगों की, और इन ह्यूमन लोग ज़्यादा हैं। ग्लूमी डेज, उदास दिन है बहुत। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, निराशा है, घोर अंधकार है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, इसलिए हम तैयार करते हैं अपने आप को कि हम अच्छी यादों को सेलेक्ट कर सकें, और उन अच्छी यादों को सेलेक्ट करके उनको एक हार बनाकर उन अच्छी यादों को हमेशा के लिए अपने पास सहेज कर रख सकें, और बुरी चीज़ों को हम अपने आप से दूर कर सकें। मूविंग टू स्टेंजा थर्ड, द पोइट सेज, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. John Keats says कि in spite of all this, a beautiful thing helps to remove the cover of gloom or darkness from our lives. It makes us love life despite the things that makes us sad and covers our spirit with darkness. He says कि yes, इन सारी नेगेटिव चीज़ों के बावजूद, ओवर डार्कन, डेस्पोंडेंट, इविल क्वालिटीज़, मैलिसनेस, डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ नोबल नेचर, कहता है इन सब के बावजूद सम शेप, कुछ ना कुछ सुंदर वस्तुएं हैं जो मूव्स अवे द पॉल। मूव्स अवे द पॉल का मतलब होता है सैडनेस, जो इस सैडनेस को हमारी लाइफ से दूर करती हैं। ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर हैं। अगर धरती पर सब कुछ नेगेटिव हो तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू लिव, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को धरती से, नेचर से जोड़ कर रखती हैं, और हमारी डार्क स्पिरिट्स जो हैं उनसे अंधेरा दूर करती हैं। और वो चीज़ें क्या हैं? वो खूबसूरत चीज़ें हैं सन, मून, ट्रीज़, चाहे वो ओल्ड हैं, यंग हैं, स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप। जैसे सिंपल शीप, वैसे यहाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं उपमा ली गई है। ये यहाँ पर सिंपल शीप का जो है गूढ़ अर्थ वो ये है कि बाइबल के अंदर जो है ना, साधारण मनुष्य, कॉमन मैन को, कॉमन फॉक को जो है बाइबल के अंदर सिंपल शीप कहा गया है। कि अथाह गर्मी, भटकते हुए रेगिस्तान में जैसे मनुष्यों के लिए क्या है, छायादार वृक्षों का झुरमुट है। ये काम है किसका? ब्यूटी का। तो ब्यूटी हेयर स्टैंड्स फॉर नेचुरल थिंग्स। मूविंग टू स्टैंजा नंबर 4, दैट इज एंड। नाउ मूविंग टू स्टैंजा नंबर 4, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. This poem actually feels or sounds very tough to the students, but I think it's very easy. And such आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही होते हैं डैफोडिल्स के फ्लावर। द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, दे ऑल आर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस फॉर अस। द ट्रीज स्प्राउट एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस टू प्रोवाइड शेल्टर विद इन देयर ग्रीन कवरिंग फॉर द सिंपल शिप. द डैफोडिल्स ब्लूम विद इन द ग्रीन सराउंडिंग्स in which they grow. The clear and small streams of water make a cooling shelter for themselves against the hot season. Thick mass of ferns looks very beautiful with musk roses. जॉन कीट्स कहते हैं कि जो सन है, मून है, ट्रीज़ है, चाहे वो ओल्ड है, यंग है, ये सभी हमारे लिए हैप्पीनेस का सोर्स है। जिस प्रकार से जो ट्रीज स्प्राउट करते हैं, अंकुर फूटते हैं, उनमें कोपले फूटती हैं, उनकी ब्रांचेस शेल्टर देती हैं लिविंग को, नॉन लिविंग को, जो उनकी जो ग्रीन कवरिंग होती है वो सिंपल शिप के लिए, कॉमन मैन के लिए, फोक के लिए वो कितनी राहत भरी होती है। जो डैफोडिल्स के फ्लावर होते हैं वो ब्लूम करते हैं और आसपास हरियाली क्रिएट करते हैं, इतना सुंदर सीन क्रिएट करते हैं। छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं पानी की जो आसपास के
जो एरिया को कूल करती हैं, गर्मी में राहत देती हैं, जो थिक फर्न्स हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, वो कितनी लुक्स ग्रैंड विद देयर ब्यूटीफुल मस्क रोजेस, खिलते हैं जब उन कांटेदार झाड़ियों के अंदर गुलाबों के फूल और वो महकते हैं, तो वो कितना अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा प्रस्तुत करते हैं. एक्चुअली द फुल पोएम इज विद वेरियस काइंड्स ऑफ, वी कैन से, यूज ऑफ ब्यूटीफुल एंड नाइस सिंबल्स taken from real nature, like daffodils, rills, we can say mid forest break, musk rose blooms. These all are example of real life, we can say, from nature, which creates a very majestic effect on our senses, and we feel quite relaxed in the lap of nature. Moving to concluding stanza, that is stanza number 5. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. Here the poet says कि mighty dead people whose achievements made them great and powerful, they inspire us through their sagas of their tale and noble works. Their legends and stories inspire us. We can imagine their magnificence. The beautiful thing is also a source of joy, just as the lovely tales we have heard or read give us profound happiness. A fountain of immortality pours its sacred and immortal drink into the heart and soul of man. This immortal drink gives man endless fountain full of immense joy for us. कंक्लूडिंग स्टेंजा में जॉन कीट्स कहते हैं कि इसी प्रकार की भव्यता, ग्रैंडियर होता है, भव्यता है ऑफ द डूम्स. व्हाट डू मीन बाय डूम्स? दोज हु आर पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सन्स इन देयर टाइम्स. जो ग्रेट, महान रहे हैं, उन लोगों को यहाँ डूम्स कहा गया है. वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, वो जिन्होंने भव्य जीवन जिया और जिनको भव्य मौत मिली. अगर हम उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें कानों में ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत का पान कर रहे हो हम, कोई अमृत का फव्वारा, और वो भी स्वर्ग के किनारे से, ब्रिंक होता है कॉर्नर से, स्वर्ग के किनारे से कोई हमारे ऊपर अमृत की वर्षा कर रहा है. इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब यहाँ है एवर लास्टिंग प्लेजर. When we read about the mighty dead, we feel an everlasting pleasure in reading or listening their mighty stories. So I hope you all like this poem, and if there is any doubt, you can consult me. Thank you and have a nice day. पहुंच गया हमारा गाँव अरे मास्टर. कहाँ से होगी स्टॉप, कहाँ से होगी? मैंने रिकॉर्ड किए, ये कर दी मैंने.